Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9 biology, chapter 3 biodiversity. Second block of biology consists of the 9 lectures. So students, in lecture 1 we will discuss the introduction to biodiversity and importance of biodiversity. So students, in lecture 2 we will discuss the classification, aims and principles, in which we will discuss aims of classification, basis of classification and taxonomic hierarchy. Okay students, in lecture 3 we will discuss the species, the basic unit of classification, the history of classification system. Then in lecture 4 we will discuss the 2 kingdom classification system, 3 kingdom classification system and 5 kingdom classification system. Then in lecture 5 we will discuss the 5 kingdoms and status of viruses. Then in lecture 6 we will discuss the binomial nomenclature, conservation of biodiversity and impacts of human beings on biodiversity. So students, in lecture 7 we will discuss the deforestation and overhunting. In lecture 8 we will discuss the steps for the conservation of biodiversity and endangered species in Pakistan. So students, in lecture 9 at the end we will discuss the review questions from chapter 3. So our learning journey be like. So students, in today's lecture we will discuss the introduction to biodiversity. So in this we will discuss the concept of flora and fauna. So then we will discuss factors on which biodiversity depends. Then at the end we will discuss the importance of biodiversity. So students, today we will discuss biodiversity. What is biodiversity? Basically biodiversity is derived from the 2 words. इसकी derivation 2 words से हुई है. वो कौन से 2 words हैं? Like first one bio and the second one is diversity. Okay students, now question arises, what is the meaning of bio and diversity? Basically bio means life, means के इसमें living organisms present होते हैं. Then diversity means variety within a species. We will discuss the actual definition of biodiversity. What is biodiversity? Basically biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. It means कि ये आपके इकोसिस्टम्स में ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक लायंस की स्पीशीज होती हैं, टाइगर्स की स्पीशीज होती हैं, इंसेक्ट्स की स्पीशीज होती हैं, प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं, जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ फ्लोरा. व्हाट इज फ्लोरा? बेसिकली दैट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द फ्लोरा. अभी जो प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिक रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में, इन प्लांट लाइफ को आप क्या कहते हो? फ्लोरा कहते हो. What about fauna? Students, basically the diversity of animals in a region is called fauna. अभी जो variety of animals है in a particular region, that is called the fauna. All animals life which is present in a specific region is called the fauna. Okay students, now we will discuss the factors on which biodiversity depends. Basically the diversity of plants and animals in a region depends on फर्स्ट फैक्टर जो है इसका क्लाइमेट है. मीन्स कि जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज की जो वैरायटी है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं. क्लाइमेट मीन्स कि जो आपकी टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं, ये रेनफॉल का पैटर्न है, ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को क्या करता है? इफेक्ट करता है. एंड द सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड मीन्स ये जो हाइटेड एरियाज होते हैं, व्हेन यू विल मूव अवे फ्रॉम द सी लेवल, तो देन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है. हाई माउंटेनियस रीजन में, जो माउंटेन वाले रीजन्स होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन लेस प्रेजेंट होती है. सो ये जो आल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, सो जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं अडेप्टेड टू द आल्टीट्यूड एरियाज, वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं. बट
जो दूसरे प्लांट्स हैं जिनके अंदर अडेप्टेशंस नहीं है, या ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अडेप्टेशंस नहीं है इन हाइटेड एरियाज के लिए, सो देन वो क्या वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो अल्टीट्यूड जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट करता है. नाउ थर्ड फैक्टर इज सॉइल. सॉइल की कंडीशंस भी प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ को इफेक्ट करती हैं. एंड फोर्थ फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज. मीन्स के जो दूसरी स्पीशीज होती हैं उनकी प्रेजेंस भी प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को इफेक्ट करती है. Distribution of biodiversity. Okay students, biodiversity is not evenly distributed on earth. Basically, it is richest in tropics. बायोडाइवर्सिटी की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं. ट्रॉपिकल रीजन्स आर दोज रीजन्स विच आर प्रेजेंट सराउंडिंग द इक्वेटर. अब ये जो अर्थ का जो इक्वेटर होता है जहां पे सनलाइट की अमाउंट मैक्सिमम होती है, हॉटेस्ट रीजन होते हैं, इनके सराउंडिंग में ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं. अब ये जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं इनमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी रिचेस्ट अमाउंट में होती है. देन मैनी स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन्स. अभी जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, ऐसे रीजन्स जहां पे माइल्ड टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वहां पे भी स्पीशीज की अमाउंट ज्यादा होती है. देन फ्यूअर स्पीशीज इन पोलर रीजन्स. अभी जो पोलर रीजन्स हैं ये कोल्डेस्ट रीजन्स होते हैं अर्थ के, यहाँ पे फ्यू स्पीशीज होती हैं बायोडाइवर्सिटी की. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे ये जो शो और ये पिक्चर, यहाँ पे ये है ट्रॉपिकल रीजन्स. इट मींस कि ये ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी दिखाई हुई है. देन ये जो राइट साइड पे रीजन्स में जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की वो टेम्परेट रीजन में है. ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, biodiversity found on earth today is the result of 4 billion years of evolution. It means कि जो आप variety of living organisms, animals की, plants की observe करते हो अर्थ पे, ये रिजल्ट है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एवोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली एवोल्यूशन चेंजेस होते हैं इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. That changes are called the evolution according to the scientist. So students, the origin of life basically is not well known to science, though limited evidence suggests that until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. Okay students, ये जो origin है life का basically scientist को भी known है, but according to them रफली जो इसकी एस्टिमेशन लगाएं तो देन 600 मिलियन ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया. सबसे पहले बैक्टीरिया प्रेजेंट थे अर्थ पे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे. समहाउ अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट मिलियन ईयर्स अगो आपकी अर्थ पे जस्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. देन एलिमेंट्स में आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्डिंग हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई. देन वाटर से क्या बने आगे फर्दर बैक्टीरिया और देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, इनसे आगे फर्दर डेवलप हुए अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट. सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड वी विल डिस्कस द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो सोर्स ऑफ फूड है. सो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस. इट मीन्स के प्लांट्स को आप एज अ वेजिटेबल खाते हो और एनिमल्स लाइक गोट, शीप, काउ, इनसे आप मिल्क भी ऑब्टेन करते हो, इनसे आप मीट भी ऑब्टेन करते हो. देन सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं. सो इसकी जो सेकंड इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो है सोर्स ऑफ ड्रग्स. A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from the biological sources. Means ये जो drugs होती हैं ये addictive drugs भी हो सकती हैं, medicinal drugs भी हो सकती हैं. आप जो medicinal drugs जो कि आप plants और animals से derive करते हो वो क्या हैं? Plants से आप कार्डियोटॉनिक्स लेते हो जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं. देन एनिमल से आप एंटीटॉक्सिन्स लेते हो. सो जिसकी थर्ड इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो क्या है? सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स. इट मीन्स कि आप बायोडाइवर्सिटी से इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी ऑब्टेन करते हो जिनको आप फर्दर इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हो. अब ये जो
रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबड़ हैं, ये प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है, बट आप इनको इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. देन बायोडाइवर्सिटी plays important role in making and maintaining ecosystem, means के it regulates the chemistry of our environment, of our atmosphere and water supply. अब ये जो biodiversity होती है, like plants जो हैं और जो animals वगैरह हैं, ये आपके जो वाटर साइकिल होता है इन्वायरमेंट का उसको रेगुलेट करती हैं. तो देन ये जो रेनफॉल की अमाउंट होती है वो भी रेगुलेट होती है. सो बायोडाइवर्सिटी की ये इम्पोर्टेंस है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें आपके इन्वायरमेंट के अंदर. ये रिसाइकल भी करती है न्यूट्रिएंट्स को और फर्टाइल सोइल प्रोड्यूस करने में भी क्या करती है, हेल्प आउट करती हैं. फर्टाइल सोइल ऐसी सोइल जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं. So this is the information regarding the importance of biodiversity. Okay students, up till now we have discussed the biodiversity, introduction of biodiversity, definitions, factors on which biodiversity depends. Then we will have discussed the flora and fauna. Then at the end we have discussed the importance of biodiversity. At the end we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं, like biodiversity is richest in A option tropics, B option temperate, C option polar regions or D option none of them. So the correct answer of this MCQ is A option tropics, means कि जो tropical areas होते हैं जहाँ पे maximum rainfall होती है वहाँ पे biodiversity richest होती है. Second MCQ is biodiversity found on earth is the result of dash years of evolution. A option 3 billion, B option 4 billion, C option 5 billion or D option 6 billion. So the correct answer of this MCQ is B option 4 billion, means के biodiversity आपकी अर्थ में 4 billion years of evolution का result है. Third MCQs from today's lecture is diversity means dash within a species and among species. So options are A option life, B option microorganisms, C option variety or D option similarity. So the correct answer of this MCQ is C option variety, means के diversity का basically meaning होता है variety within a species and among species. So इस फॉर्म में आपको MCQs आ सकते हैं. Short question answers from today's lecture. आपको short questions किस फॉर्म में आ सकते हैं, like define a term biodiversity. Answer is biodiversity is the measure of the variety of organisms present in different ecosystems. Then what do you understand about flora and fauna? So what about flora and fauna? Basically answer is the diversity of plants in a region is called flora, and what about fauna? The diversity of animals in a region is called fauna. Third short questions from today's lecture is on which factors biodiversity of plants and animals depends. So students, the answer is the diversity of plants and animals in a region depends on climate, altitude, soils and presence of other species. Fourth short question is what is the origin of life? So students, the answer is the origin of life is not well known to science, although limited evidence suggests that until 600 billion years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. Then fifth question is give the roles of biodiversity. Give the two roles of biodiversity. Then the answer is biodiversity acts as a source of food. Biodiversity provides food for humans. Then source of drugs, it means a significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources. So इस फॉर्म में आपको short questions आ सकते हैं.